Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So we will continue with the drugs used in the asthma. Yesterday we have started with the drug used in the bronchial asthma and cough. We have seen yesterday what are the types of different type of coughs, and we also seen the classification. We also seen the drugs used in the treatment of cough yesterday, right? So today I would like to revise you classification, and then we'll start again the details of the drugs used in the asthma, right? So until other student joins, up to that I will revise you the classification of drugs used in the asthma. So very important. As I told you a lot of times, the classification part is important, and a lot of questions are going to be covered just by doing classification. So drugs used in the bronchial asthma. So the basic problem in the bronchial asthma क्या होता है? In the bronchial asthma, there is a narrowing of your airway. There is increased bronchial secretion. There is a decreased bronchial airway, and there is a bronchoconstriction. So the primary, there is a bronchoconstriction. Obviously you have to use bronchodilator, right? So what are the bronchodilators? Bronchodilators are of three type. तो bronchodilators जो है तीन टाइप के होते हैं. सबसे पहला है फर्स्ट है आपका सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट. सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट मतलब सिंपैथोमाइमेटिक्स. बीटा 2 एगोनिस्ट इसमें साल्बिटामोल, also known as albutol, terbutaline is there, bambuterol is there, salmeterol is there, and then formoterol is there, है ना? So you can remember salbutamol and terbutaline, they are known as short acting drugs. और ये bambuterol, salmeterol and formoterol, इसमें ये टेरॉल वाले जो है टेरॉल, तो these are nothing but the long acting drugs, है ना? तो उसमें आप साल्मेटेरॉल में मेट्रो टर्म आता है, मेट्रो. सो मेट्रो रन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सो लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स, है ना? साल्बिटामोल, टर्बुटालाइन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, बॉम्बुटेरॉल, साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल दे आर द लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स. देन सेकंड क्लास आता है मिथाइल जैंथिन्स. मिथाइल जैंथिन्स आर नथिंग बट द phosphodiesterase inhibitor. So they are known as a phosphodiesterase inhibitor, PDE, PDE phosphodiesterase inhibitor. They increases the cyclic AMP level in the bronchial smooth muscle cell and increases the bronchodilation. So in that you have theophylline, aminophylline. Then aminophylline is a first line drug used in the acute asthmatic attack. Then choline theophyllinate, hydroxyethyl theophylline and doxyphylline. These are the drugs known as methyl xanthine. थर्ड कैटेगरी आता है ब्रोंकोडाइलेटर में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, राइट? तो इसमें इट्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये इनहेलेशनल ड्रग्स है, याद रखना है आपको. सेकंड क्लास इज नथिंग बट द ल्यूकोट्राइन antagonist, because in the asthma due to the release of leukotrienes, so there is a bronchoconstriction and decreased airway resistance, decreased airway and also increased secretion. So leukotriene antagonists are nothing but the, actually these are leukotriene receptor blockers. So montelukast and zafirlukast. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं बहुत बार. देन मास्ट सेल स्टेबलाइजर. So when antigen antibody react, there is a degranulation of mast cell and release of histamine, which can cause inflammation, bronchitis, bronchospasm. So that's why to stabilize the mast cell you use a mast cell stabilizer. Remember sodium chromoglycate, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है.
then ketotifen, right? Then fourth class is nothing but the corticosteroids. So steroids, what they will do? They will inhibit the formation of prostaglandins. They will inhibit the formation of leukotrienes. They will prevent the chemotaxis, that is the migration of neutrophils, leukocyte towards the inflammation, and also they will decrease the secretion. So they are multiple acting drugs. So those corticosteroids which are given by systemic route, hydrocortisone, prednisolone, and other like dexamethasone, betamethason, triamcinolone. Then inhalational corticosteroids, they are known as inhalational corticosteroids, ICS. Inhalational corticosteroids, beclomethasone dipropionate, then budesonide, fluticasone, and flunisolide, then cyclesonide. These are the inhalational corticosteroids. Last class है आपका एंटी इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी, दैट इज ओमालीजुमैब. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. तो राइट, इस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. So yesterday we have seen the bronchial asthma, symptoms of bronchial asthma, what happens exactly in the bronchial asthma. Yesterday I have told you this, so I am not going to repeat it. Then next to the bronchial asthma, there is one more disease known as a chronic obstructive pulmonary disease. So also it is an inflammatory disease. ये भी आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होता है. तो इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ द bronchial tree and lungs. In case of this, inflammation is due to the migration of neutrophils, macrophages, and cytotoxic lymphocytes. So it is one of the hereditary, or it is one of the genetic also. Now it is characterized by alveolar destruction, bronchial fibrosis, loss of bronchial elasticity, chronic obstructive pulmonary disease. The airway obstruction is which is increased during the exercise, causing the shortness of breath. So it is a chronic obstructive pulmonary disease. Now treatment approaches क्या होने चाहिए in case of bronchial asthma, in case of COPD. So first of all, I have told you, suppose you are in the garden. If you are in a garden, right, so there you are passing your time. Suppose you inhale any pollen grain. So first time that pollen grain will sensitize your bronchial smooth muscle. First time जब आप pollen grain से एक्सपोज हो गए, या फिर इरिटेंट, या फिर कोई पोल्यूटेंट, या फिर कोई ड्रग्स, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल, ठीक है. सो फर्स्ट टाइम जब इनहेल करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसको आपकी बॉडी एज एंटीजन ट्रीट करेगी, एंड पोलन ग्रेन विल बी ट्रीटेड एज एंटीजन. अगेंस्ट दैट एंटीजन योर बॉडी विल प्रिपेयर एंटीबॉडी. In the first exposure. Now upon subsequent exposure, अगर फिर से एक बार एक्सपोजर हो गया, सपोज और एक बार आप गए उस गार्डन में, और वहाँ पे जो पोलन ग्रेन से, या फिर वहाँ पे जो आपके पोलन ग्रेन से, या फिर वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है, तो वी हैव ऑलरेडी एंटीबॉडी इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है. सो फिर से अगर आप एक्सपोज हो गए पोलन ग्रेन से, या फिर कोई इरिटेंट को, या फिर कोई आपके डस्ट को, तो आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एंड इसके बाद में आपके जो मास सेल है, तो दे विल बी डीग्रेनुलेटेड, एंड फ्रॉम दैट मास सेल देयर इज रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, ब्रैडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, ब्रैडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, which causes the then tumor necrotic alpha factor,
which causes the bronchial constriction, increase the bronchial secretion and decrease the bronchial airway, right? That is the asthma. Now so treatment approach क्या होना चाहिए? So first prevent the antigen antibody reaction. So avoid first exposure to the antigen. You can avoid the exposure, है ना? Then second nebulization, है ना? Sorry, neutralization of immunoglobulin E by omalizumab. Omalizumab आपने देखा it is a anti-immunoglobulin E antibody, so you can neutralize that. Then third strategy, third approach क्या होना चाहिए? Suppression of inflammation and bronchial hypersensitivity. How you can suppress the inflammation? By using glucocorticoids, right? Fourth आपका approach क्या होना चाहिए? You can antagonize the released chemicals like a leukotriene, उसका antagonist यूज कर सकते हो, leukotriene antagonist. Histamine को antagonist, histamine को block कर सकते हो by using histamine 1 blocker. So also you can use platelet activating factor antagonist. Then also you can try anticholinergic drugs and bronchodilator like sympathomimetics, then methylxanthines, etc. So these are the different treatment approaches for the treatment of bronchial asthma. ये different treatment approaches है for the treatment of bronchial asthma. Now we'll see the next point, है ना? ये already अपने देखा है कल. Now next is nothing but the also I have told you this last time. So है ना? So these are the different treatment approaches कल अपने देखा है. Now है ना? So what happens exactly? I would like to explain you again. तो देखो अस्थमा में क्या होता है? एंट्री ऑफ एलर्जन में भी आइदर पोलन रेन और डस्ट और एनीथिंग इन द एयरवे. आपके ब्रोंकस में है ना, आपके ब्रोंकल ट्री में आएगा ये. नाउ इट विल सेंसिटाइज योर CD4 सेल एंड है ना हेल्पर टी सेल, CD4 सेल एंड हेल्पर टी सेल. So they will release, helper T cell and CD4 cell will release leukotriene 4, leukotriene 5, leukotriene 4 and leukotriene 5 induce lymphocyte to produce a immunoglobulin E. तो पहले ये सेंसिटाइज करेंगे, बाद में क्या होगा? इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी, राइट? नाउ व्हेन अपॉन एक्सपोजर immunoglobulin E will bind with the mast cell and also basophil surface receptor at the airway mucosa. आपका जो ब्रोंकियल म्यूकोसा है उसमें ये इम्यूनोग्लोबिन ई मास्ट सेल एंड बेसोफिल को बाइंड करता है. एंड अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर तो क्या होगा? अगर एक्सपोजर हो गया तो इंडिविजुअल इज सेंसिटाइज्ड फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, है ना? मतलब अगेन री एंट्री अगर हो गया उस पोलन ग्रेन का और डस्ट का, सो वी हैव ऑलरेडी allergen which is antigen and antibody we have already here on a mast cell. So antigen antibody reaction will be there. There is a degranulation of mast cell, a release of inflammatory chemicals, right? Which can cause asthma. Now asthma is caused in two phases. Some are the early phase symptoms, some are the late phase symptoms. So what are the early phase symptoms? You know, so that is nothing but the mast cell, you know, mast cell will be degranulated and it will be cause bronchoconstriction. Then opening of mucosal interepithelial function, antigen can pass through the gap, directly stimulate the M3 receptor or also can act via neuronal reflex. Also increases the permeability, vascular permeability leading to bronchial edema, you know, and because of that edema there is a recruitment or proliferation of leukocyte over there, you know. Mucin increase करता है, mucus increase करता है, right? Now again late phase reaction क्या होता है? Late phase. So in the late phase epithelial cell damage by the eosinophils and major basic protein eosinophil cationic protein. Eosinophil mediate the mast cell fixation and lastly क्या होगा? Overwhelming and inflammatory reaction recruited leukocytes. ठीक है, तो ये लेट रिएक्शन होता है, अर्ली रिएक्शन होता है. तो ड्रग्स कौन से यूज करते हैं? ऑलरेडी अपन ने देखा है, ब्रोंकोडाइलेटर में 3 आता है ना, सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट,
उसके बाद में एंटीकोलिजिक, उसके बाद में मिथाइलजैंथिन। तो एंटी इंफ्लेमेटरी में आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आता है, एंटी ल्यूकोट्राइन्स में इधर सिंथेसिस इनहिबिटर जैसे बेनॉक्साप्रोफेन, और इसमें जिलोटोन भी आता है, जिलोटोन एंड बेनॉक्सिप्रोफेन, दे आर नोन एज अ ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर, जिलोटोन। एंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स मतलब मोंटेलुकास, ज़ैपिरलुकास, ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉकर है। देन अननोन मैकेनिज्म से क्रोमिलिन, और इसको बोलते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मिसलेनियस में बाकी ड्रग्स आएंगे आपके जैसे आपका एंटी हीमोग्लोबिन ई आएगा, है ना। तो ये ऑलरेडी अपन क्लासिफिकेशन 2-3 बार देख चुकी। ना पहला क्लास है आपका एड्रेनर्जिक ड्रग्स और सिलेक्टिव बीटा टू स्टिमुलेंट। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स और सिलेक्टिव बीटा टू स्टिमुलेशन, है ना। तो जिसमें जो साल्बेटामॉल, टर्बिटोलिन वगैरह काइंड के ड्रग्स है, सो व्हाट दे विल डू, तो दे विल कॉज ब्रोंकोडाइलेशन, because of their action selectively on a beta 2, they stimulate the beta 2 receptor of the bronchi, and there is increase in the cyclic AMP in the bronchial cell, है ना। bronchial muscle cell में cyclic AMP, cyclic adenosine monophosphate increase कर देता है, increase the cyclic AMP in the mass, है ना, mass cell also, है ना। so they will increase the cyclic AMP in the muscle cell of bronchi, smooth muscle cell of bronchi, as well as mass cell। तो ब्रोंकियल सेल में साइक्लिक एएमपी बढ़ गया तो ब्रोंको डायलेशन होता है, एंड इफ देयर इज है ना इंक्रीज साइक्लिक एएमपी इन द मास सेल, तो एंड अदर इंफ्लेमेटरी सेल, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ डिक्रीज्ड रिलीज ऑफ इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स। बोथ ऑफ these actions will contribute the anti-asthmatic action of these drugs, that is a bronchodilation, and that is a selective beta 2 agonists are used mostly adrenaline, then isoprenaline, ये क्या है, they are non selective in nature, adrenaline, isoprenaline non selective होते हैं, and also as a cardiac adverse effect, that's why उसमें salbutamol, terbutaline, है ना, ये ड्रग यूज करते हैं। so इसमें भी दो टाइप के बीटा 2 एगोनिस्ट, so as you can see over here, beta 2 agonist, so short acting beta 2 agonist, salbutamol, terbutaline, levabuterol, है ना, पेरिबेडोल, आइसोइथेरिन, है ना, बायोटोटेरॉल, देन फेनोटेरॉल, प्रोकैटेरॉल, दीज आर द शॉर्ट एक्टिंग अल्फा 2 बीटा 2 एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग वाले कौन है, साल्मेटेरॉल, ये देखो मेटेरो मतलब क्या, मेट्रो क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पर भागता है ना। सो फॉर्मो, है ना, फॉर्मेटेरॉल, है ना, अल फॉर्मेटेरॉल, कार्मेटेरॉल, ओल्डोडेट्रॉल, ये सब क्या है, टेरॉल वाले जो है, टेरॉल क्या है, लॉन्गर एक्टिंग है ना, और मॉल वाले, लीन वाले, मॉल, लीन सब क्या है, शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। नाउ इन द सिम्पैथोमाइमेटिक अगेन इपेड्रिन इज आल्सो देयर। इपेड्रिन इज अ नॉन सेलेक्टिव अल्फा प्लस बीटा 1 बीटा 2 agonist, so which can also dilate the bronchi slowly, and its action will last for around 3 to 5 hours. Because of the low efficacy and more adverse effect, it is not used nowadays. So mostly use होता है salbutamol, and beta 2 agonists are mostly used for acute attack. तो acute attack होता है, ये drug use करती है, acute asthmatic attack, because क्या है कि they are the only drugs used in the acute attack, because they only can dilate the bronchi. तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ये वाले ड्रग जो है वो यूज किए जाते हैं, जैसे साल्बुटामॉल हो गया, उसको अल्बुटेरॉल बोलते हैं अपन, टर्बिटोलाइन हो गया, है ना। इनहेलेशंस, दे आर गिवन बाय इनहेलेशन, सो दे आर रैपिडली एक्टिंग, बट दे आर हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये इनहेलेशन से देते हैं, इनहेलेशन, बट दे आर हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यहाँ पे याद रखना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखो, दे interact with the beta 2 receptor of the bronchi, and they causes the increase in the cyclic AMP in the bronchial cell, muscle cell, which causes the bronchodilation. Also they causes the increase in the cyclic AMP in the mast cell or other inflammatory cells, which leads to decrease in the release of inflammatory chemicals. Both these actions contribute the anti-asthmatic effect of beta 2 agonist, right? तो ये क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, याद रखना है। साल्बुटामॉल, टर्बिटोलिन, है ना, लिवेलब्यूटेरॉल, परब्यूटेरॉल, आइसोइथेरिन,
बायोटो है ना, बायोटोल, phenoterol and procaterol. These are the short acting, whereas a salmeterol, formoterol, alformoterol, carmoterol, जो टेरल है ओल्डाटेरॉल एंड इडाटेरॉल. टेरल वाले क्या है, लॉन्गर एक्टिंग, याद रखना है. नाउ फर्स्ट ड्रग इज साल्बेटामोल. तो साल्बेटामोल थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन. तो इट इज हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट and it can cause bronchodilation within a 5 minutes, which will last for 2 to 4 hours. तो जो bronchodilation करता है salbutamol, that is a long lasting 2 to 4 hours, but इसको थोड़ा सा बाद में ये होता है क्या, tolerance होता है, tolerance to the bronchodilation action is there, right? So highly selective beta 2 agonist which causes the bronchodilation in a 5 minutes, which will last for 2 to 4 hours when inhaled in the form of meter dose inhaler. Oral bioavailability, oral जब देंगे तो there is a 50% bioavailability because it is undergoing the first pass effect in the GIT, and oral effect will last for 4 to 6 hours. इसका adverse drug reaction क्या है, dose dependent muscle tremors, muscle involuntary contract होंगे, palpitation है ना, restlessness, nervousness, throat irritation and ankle edema है ना. साल्बेटामोल बाद में उसका ही भाई है टर्बिटोलिन. साल्बेटामोल के बाद में क्या है, टर्बिटोलिन. साल्बेटामोल इज आल्सो नोन एज अल्बिटोलॉल है ना, similar to salbutamol in other aspect, but these two are the most popular drug for quick reversal of your bronchospasm. ये दोनों ड्रग बहुत ही मतलब फेमस है फॉर द ब्रोंकोस्पाज्म, बट नॉट फॉर रेगुलर यूज. रेगुलर यूज के लिए इनहलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड ऑन अ लॉन्ग बेसिस. इनहलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे आर गिवन फॉर रेगुलर बेसिस. ये ड्रग्स क्या है, टू रिलीव द एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा है ना. एंड फॉर द प्रोफिलैक्सिस डिफरेंट ड्रग्स आर, प्रोफिलैक्सिस के लिए आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं. नाउ बाम्बोटेरॉल, सो इट्स अ बायकार्बोनेट ईस्टर ऑफ टर्बिटोलिन है ना. तो याद रखना है आपको, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. सो बाम्बोटेरॉल इज एक्टिव मेटाबोलाइट. बाम्बोटेरॉल इज अ प्रोड्रग. बाम्बोटेरॉल इज अ प्रोड्रग ऑफ, इट इज अ प्रोड्रग ऑफ टर्बिटोलिन. इट इज अ प्रोड्रग ऑफ टर्बिटोलिन. कैसा प्रोड्रग है, सो बायकार्बोनेट ईस्टर प्रोडक्ट ऑफ टर्बिटोलिन. बायकार्बोनेट ईस्टर प्रोडक्ट नहीं, बायकार्बोनेट ईस्टर प्रोड्रग, यहाँ पे थोड़ा प्रोड्रग है, प्रोड्रग ऑफ टर्बिटोलिन. इट इज स्लोली हाइड्रोलाइज्ड बाय pseudocholinesterase and used as a single dose 10 to 20 milligram for nocturnal chronic asthma. मतलब रात के समय में जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है उसमें यूज करते हैं, नॉक्टर्नल क्रोनिक अस्थमा, राइट. तो याद रखना है बायकार्बोनेट ईस्टर प्रोड्रग ऑफ टर्बिटोलिन. इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं. साल्मेटेरॉल, it is a long acting beta 2 agonist used for the maintenance therapy of asthma, not for acute attack. It is used in the combination with the corticosteroids. corticosteroid के साथ में यूज करते हैं इसका. It use of corticosteroids along with this drug reduces the dose of corticosteroids. It is used in the asthma. It is indicated in a combination with the inhaler steroid. Formoterol क्या है, similar to salmeterol and it is longer acting. So active will act for 12 hours when given by inhalation. ठीक है. बाद में longer acting agonist जो है, they are inhaled along with the anticholinergic drugs also in the chronic obstructive pulmonary disease. Longer acting beta 2 agonist लेंगे, salmeterol, formoterol, they are used along with the anticholinergics. जैसे क्या है आपका इप्राटोप्रियम ब्रोमाइड, टियोटोप्रियम ब्रोमाइड, उसके साथ में सीओपीडी में यूज करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. नेक्स्ट विल सी राइट. नेक्स्ट विल सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स. ये ड्रग्स एक्ट कैसे थे. So these drugs है ना, salbutamol, terbutaline,
bombuterol, salmeterol, formoterol. So what they are doing, they are nothing but the selective beta 2 receptor agonist on a bronchial smooth muscle. So they interact with the beta 2 receptor and they increases the conversion of ATP to cyclic AMP. So cyclic AMP क्या करता है? So in the cell, increased level of cyclic AMP in the bronchial cell, bronchial muscle cell, there is a relaxation, bronchial smooth muscle cell, and also this increase the cyclic AMP in the mast cell and other inflammatory cell. So decreases the release of inflammatory mediators, and also decreases the bronchosecretion by alpha stimulation. That is the mechanism of action of these drugs, right? चलो यहाँ पे देखो. So beta 2 agonist क्या करते हैं? They are known as a bronchodilator. So they will act at a smaller bronchioles. यहाँ पे smaller bronchioles जो है, they will not dilate your major bronchial tree. So they will act on a smaller bronchioles, right? Smaller bronchioles. And आपके anticholinergic drugs जो है, जैसे ipratropium bromide, tiotropium bromide, तो ये क्या करेंगे? They will act on a larger bronchial tree, large वाले bronchus के ऊपर act होंगे, and they will dilate the bronchi. But the efficiency of beta 2 agonist is more. Beta 2 agonist bronchodilation ज़्यादा कर दे, ये थोड़ा बहुत ही कर दे. And but इनका और एक एक्शन है, they decreases the secretion. एंटीकोलिनर्जिक क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रेशन कम करते हैं. बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं ज़्यादा. नाउ नेक्स्ट क्लास इज मिथाइलजेंथिन. और मिथाइलजेंथिन इसमें कैफीन आता है, थियोफाइलिन आता है, थियोब्रोमिन आता है. दे आर द नेचुरली ऑकरिंग xanthine alkaloids. We have already seen they are present in the tea and coffee arabica. They are also a beta 2 agonist, act on a similar way, and they also act on a smaller airways like a bronchioles. ये भी bronchioles के ऊपर ही act होते हैं, not bronchi. Smaller airways like bronchioles. So what are these? So theophylline was used in the asthma. Theophylline was previously used in the asthma, but nowadays it is only restricted to chronic obstructive pulmonary disease. COPD के लिए आजकल उसको restrict किया है. And exceptional cases of asthma. Mechanism of action क्या है? Now these drugs act by 2-3 mechanisms. These drugs act by 2-3 mechanisms. First क्या है? First mechanism is nothing but they releases the calcium. They release the more calcium from the sarcoplasmic reticulum of the skeletal and cardiac muscle in a higher concentration, which is not desired action. Second, they inhibit the phosphodiesterase enzyme, और ये आपका antihistaminic action है. So that will inhibit the phosphodiesterase enzyme, which metabolizes. ये enzyme क्या करता है? Phosphodiesterase metabolizes the cyclic AMP. This phosphodiesterase enzyme metabolize the cyclic AMP, है ना. And cyclic AMP का metabolism अगर हो गया तो cyclic AMP ज़्यादा नहीं रहेगा सेल में, तो bronchodilation नहीं होगा. cyclic AMP ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ज़्यादा होना चाहिए cyclic AMP, cyclic GMP. So they inhibit the phosphodiesterase enzyme when cyclic nucleotide like cyclic AMP, cyclic GMP are increased in the bronchial cell or cardiac cell or vascular smooth muscle. So they add inflammatory cells. There is a bronchodilation, cardiac stimulation and vasodilation occurs. मतलब यहाँ पे bronchodilation is desired one, but vasodilation is not desired one. Your cardiac stimulation is not desired one. So they are adversely affecting, but inflammatory mediator is release inhibited. मतलब when cyclic AMP or cyclic GMP is increased in case of bronchial cell, bronchodilation. When it is increased in the cardiac muscle, there is a cardiac stimulation. When increased in the smooth muscle of blood vessel, vasodilation. When cyclic AMP, cyclic GMP increased in the inflammatory cells, so there is a decreased release of inflammatory mediators. So last action and first action is useful in the bronchial asthma. Now these drugs also act by blocking the adenosine receptor. These drugs also act by blocking the adenosine receptor. इसके ऊपर भी already question आ चुका है. Adenosine in a local, adenosine क्या है? It is a local mediator in the CNS and cardiovascular system and other organs. It constricts the bronchi.
dilate the cerebral blood vessel and depresses the action of pacemaker, inhibit the gastric secretion. It is blocked by methylxanthine. It is blocked by methylxanthine. तो मतलब mechanism of action of xanthines are three. So increasing the calcium concentration in the sarcoplasmic reticulum. Second आता है by inhibition of phosphodiesterase enzyme, increases the cyclic GMP, cyclic AMP. Third, by blocking the adenosine receptor, so they dilate the bronchi. Then blockage of adenosine A1 receptor, adenosine 1 receptor by theophylline can cause cardiac arrhythmia and seizures. That's why theophylline is not used in the nowadays in the bronchial asthma. Because theophylline can cause seizures and arrhythmia. Recently, it is found that low concentration of theophylline increases the histone deacetylation in the bronchial inflammatory cells and suppresses the pro-inflammatory gene transcription. तो ये हुए आपके methylxanthines. तो methylxanthines they act via increasing the calcium concentration by inhibiting the phosphodiesterase enzyme, increases the cyclic AMP, cyclic GMP in the bronchial cell, in the inflammatory cells, also increases the cyclic GMP, AMP in the bronchial, cardiac, vascular smooth muscle cell, also in an inflammatory cell. Also block the adenosine receptor. तो यहाँ पे देखो ATP और GTP, ATP adenosine triphosphate और guanosine triphosphate, so converted into cyclic AMP by the enzyme adenyl cyclase. ATP is converted to cyclic AMP by adenyl cyclase. GTP is converted into cyclic GMP by guanyl cyclase. Now AMP and cyclic AMP metabolized by phosphodiesterase enzyme. Phosphodiesterase enzyme इसको मेटाबलाइज करके क्या करता है, 5 AMP बनाता है या 5' GMP बनाता है, and that is inhibited by theophylline. Methylxanthines. ठीक है. Pharmacological actions of these theophyllines. CNS के ऊपर क्या है, they causes the stimulation and increase the motor performance, है ना. आप अगर चाय पिया आपने थोड़ा सा, है ना, बढ़ता है आपका sense of well-being and alertness. Higher dose can produce nervousness, restlessness, panic, insomnia, excitement, delirium, tremors and convulsions. तो ज़्यादा डोज लिया तो क्या होता है, delirium, tremors and convulsions. CABS cardiovascular system के ऊपर क्या है, again stimulation of heart rate, force of contraction and increasing the blood pressure, and decreases the blood pressure by vagal stimulation. मतलब increasing the blood pressure is there also there because of the vasomotor stimulation, but decreasing the BP is because of the vagal stimulation by basic response. Then muscle cell में bronchodilation of bronchial smooth muscle, relaxation of smooth muscle. Details of this pharmacology we have already seen in the CNS stimuli. तो ड्रग देखो, थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन. तो थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन. तो अमाइनोफाइलिन क्या है, थियोफाइलिन इथाइल इथिलीन डायमाइन, है ना. अमाइनोफाइलिन में क्या है, तो अमाइनोफाइलिन इज अ थियोफाइलिन इथिलीन डायमाइन, दैट इज 85% थियोफाइलिन. अमाइनोफाइलिन में क्या है, 85% थियोफाइलिन. Absorb good through oral administration. They are absorbed well per oral administration. They are protein bound and metabolized in the liver by demethylation and oxidation. तो यहाँ पे उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, demethylation and oxidation. So well absorbed through oral administration. After absorption, they will bind to plasma proteins. They are metabolized in the liver by demethylation and oxidation. Adverse drug reaction क्या है, ये अमाइनोफाइलिन क्या है, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग है. अमाइनोफाइलिन इज अ नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग, सो मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट. लेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इसको. एंड एडवर्स इफेक्ट्स आर attributed टू GIT एंड गैस्ट्रिक पेन एंड इन्फ्लेमेशन. CNS के ऊपर क्या है, हेडेक, नर्वसनेस, नोशिया, पल्पिटेशन करेगा, कन्वर्जन भी कर सकता है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर एरिथमिया करेगा, सिंकोप करेगा, and sudden death after intravenous administration of theophylline has been resulted. Drug interaction with various drug. इसका यूज क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकियल, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव
chronic obstructive pulmonary disease, apnea in the premature infants. Because it is a respiratory stimulant, so it is used in the apnea, absence of breathing in the children. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इफिकेसी. जैसे जैसे इनका डोज बढ़ता है वैसे वैसे उनका मार्जिन कम होता है. तो माइक्रोग्राम पर एम एल, जैसे मान लीजिए 1 माइक्रोग्राम पर एम एल टू यहाँ तक, मतलब से फॉर एग्जाम्पल 17 माइक्रोग्राम पर एम एल, 1 to 17 माइक्रोग्राम पर एम एल. सो दैट इज अ थेरेपेटिक रेंज. थेरेपेटिक रेंज में नॉर्मली ये इतना ही है. Now, if more than this concentration of this theophylline or aminophylline goes into the blood, so they will result in the toxicity or adverse effect. So, at the concentration range up to the 10 microgram per ml, minimum side effect is there. So, if it is more than 10, dyspnea, headache, nervousness, these are the tolerable or acceptable adverse effect. Then, अगर concentration 20 microgram तक जाता है, रेस्टलेसनेस, ट्रिमर्स, वोमिटिंग, पल्पिटेशन. ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन गया था एजिटेशन, टेकियोपनिया, ब्लशिंग एंड हाइपोटेंशन. उससे भी ज़्यादा गया तो डेलिरियम, वर्सनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टोनिंग जो होगा, एक्स्ट्रा स्टोम, ब्लशिंग, हाइपोटेंशन. ज़्यादा अगर गया तो कन्वर्जन, शॉक एंड अरिथमिया, लास्ट में डेथ भी हो सकती है. सो देयर इज अ लो सेफ्टी ऑफ मार्जिन ड्रग्स, और उसमें नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स रहे हैं. एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स इसमें क्या है, इसमें एट्रोपिन आता है आपका, टियोट्रोपिन ब्रोमाइड, इप्राडोपिन ब्रोमाइड. तो एट्रोपिन क्या है, इट इज अ मस्कर्निक 3 ब्लॉकिंग एजेंट, causes the bronchodilation and also decreases the bronchial secretion. इप्राडोपिन ब्रोमाइड शॉर्ट एक्टिंग होता है 46 में, इनहेलेशनल एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडाइलेशन. टियोट्रोपिन ब्रोमाइड इज अ लॉन्ग एक्टिंग, will act for 24 hours. They are less, है ना, they have less adverse effect than beta 2 agonist, because beta 2 agonist में ऊपर ज़्यादा adverse effect है, and because these drugs are given by inhalation route and they have poor systemic absorption. Bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease, they are the uses. They target a larger airways, ये बड़े वाले bronchus के ऊपर एक्ट होते हैं. Then leukotriene antagonist, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर है ना, जैसे ल्यूकोट्राइन रिलीज होते हैं, ल्यूकोट्राइन विल एक्ट ऑन अ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, सिस्टीन ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, सिस्टीनियल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, LTCD, LT4, LTC4D1. तो by acting on them, they will cause bronchoconstriction and increase the bronchial secretion. So that's why leukotriene antagonist कौन है भी, leukotriene antagonist Montelukast and Zapirlukast. Montelukast and Zapirlukast. ये मोन्टेलुकास्ट से मुझे और कुछ याद आ गया, लेकिन अभी मैं नहीं बोलता क्योंकि ये इसे नाराज हो जाएगी. मोन्टेलुकास्ट एंड ज़ैपिरलुकास्ट, दे आर द ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट. सिस्टीनिल ल्यूकोट्राइन, दे आर द सिस्टीनिल ल्यूकोट्राइन प्रोड्यूस्ड बाय मैक्रोफेजेस, eosinophils and other inflammatory cells. They are the main mediators for asthma, and their inhibition, they act on a cysteine anti-receptor. Inhibitors are nothing but the Montelukast, Zapirlukast. They were synthesized, both have similar actions. They block the bronchoconstriction caused by leukotrienes. They increase the vascular permeability and movement of eosinophil in the asthma. Improve the lungs function, decreases the asthma exacerbations. Both are used for prophylaxis of bronchial asthma. Both are safe. तो ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्या है, प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज करते हैं. प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या, प्रिवेंशन. एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, वही अपना एब्डोमिनल पेन, हेडेक, रैश. एक होता है मेजर इंपॉर्टेंट है चुर्ग स्ट्राउस सिंड्रोम, चुर्ग स्ट्राउस सिंड्रोम. तो which is nothing but the increase the permeability in the bronchial area, increase the blood vessel permeability and eosinophilia. They are well absorbed by oral administration and highly protein bound, metabolized by liver and excreted in the kidney. The next आता है xylitol. Xylitol क्या है, is a 5 lipoxygenase inhibitor.
तो 5 lipoxygenase inhibitor मतलब क्या है? तो आपने देखा होगा when I have told you the NSAIDs, there are two pathway. So when there is a damage to the cell membrane, there is a release of phospholipid A2 will act on it, and there is a conversion of arachidonic acid. Arachidonic acid is on one side converted into prostaglandins by COX pathway, cyclooxygenase pathway. Okay, and arachidonic acid on the other hand converted into leukotrienes by LOX pathway. LOX is nothing but the 5 lipoxygenase. So 5 lipoxygenase का जो pathway, so that is inhibited by xylitol. Xylitol is a 5 LOX inhibitor. Question already इसके ऊपर आ चुके हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके ऊपर आ गए. So 5 LOX और lipoxygenase inhibitor block the synthesis of leukotrienes, है ना, therefore block the all the leukotrienes, induced a response. Similar action like a montelukast, and it is a short acting and it is a potentially hepatotoxic. Now mast cell stabilizer, इसमें क्या आता है? Chromoglycate sodium chromoglycate. So it is a common derivative है. Common रिंग किसमें होता है? आपका warfarin में. It inhibit the granulation, inhibit the degranulation of mast cell. ये क्या है? mast cell को degranulate नहीं होने देता, है ना. If there is no degranulation, so prevent the release of histamine, leukotriene and interleukins. So but it is not an antagonist to that, है ना. So it prevents the release, not an antagonist. So effective in case of acute attack, not absorbed orally, given by inhalational route. Sodium chromoglycate. So uses क्या है इसका? Bronchial asthma है, rarely used in the prophylaxis of bronchial asthma, used in the allergic rhinitis for the symptomatic relief of, है ना. It is also used in the form of eye drop for allergic conjunctivitis. Mast cell stabilizing. Then adverse reaction, they are very less because of the poor absorption. Sometimes may can cause bronchospasm, throat irritation, and cough in some patient. Then corticosteroids, important है corticosteroids. They are not a bronchodilator, but they ये क्या करते हैं? They are not a bronchodilator, but ये क्या? They inhibit the phospholipase A2. They inhibit the phospholipase A2. क्या है इनका mechanism? They inhibit the phospholipase A2. So that is the first step. अपन ने देखा है already. So when there is a membrane damage, वहाँ से phospholipase A2 will digest your membrane lipids and convert them into that arachidonic acid. Now arachidonic acid at one end converted into prostaglandins and thromboxane by COX pathway, and by the another hand that arachidonic acid is converted to leukotrienes by LOX pathway. Now inhibition of phospholipase A2 inhibition of phospholipase A2 will block the both pathway. ये दोनों को ब्लॉक करेगा, मतलब they will prevent the synthesis of prostaglandins, thromboxane, platelet activating factor, as well as they will prevent the formation of leukotrienes, है ना. And also they also prevent the migration of leukocytes towards the bronchi. मतलब they are also inhibiting the chemotaxis. They are not bronchodilator, but they inhibit the cytokinin production, eosinophilic and lympholytic infiltration, मतलब chemotaxis. Decreases the mucous productivity of the bronchi, relieve the bronchial edema, suppress the inflamed cells, and suppress the antigen antibody reaction. Glucocorticoids, they will offer a complete and sustained relief of symptoms of asthma when given by inhalation. These drugs improve airflow, reduces the asthma exacerbation, and they have their own long-term adverse effect. So steroid के adverse effect तो होता ही, but these glucocorticoids, they are used both orally as well as inhalation. Inhalation में मीटर डोज इनहेलर होता है, तो आपको यहाँ पे इसका mechanism of action याद रखना है. By inhibiting the phospholipase A2. By inhibiting the phospholipase A2. Then systemic glucocorticoids में क्या है? They are used in the severe and chronic asthma. Systemic मतलब क्या? Orally देते. So prednisolone in a dose of
20 to 60 milligram used, है ना, daily, है ना. They are also used in the status asthmaticus, acute attack, if not responding to bronchodilator. Also used in the chronic pulmonary and chronic obstructive pulmonary disease for short duration. Now क्या है, inhalational corticosteroids, ICS, inhalational corticosteroids. उसमें these are the drug with high topical and low systemic toxicity, high topical and low systemic activity. ये टॉपिकली ज़्यादा एक्टिव है, सिस्टमिकली कब एब्सॉर्ब होते हैं तो एक्टिव ज़्यादा ना. सो एग्जांपल इज बेक्लोमिथाजोन डाइप्रोपियोनेट, देन ब्यूडेसोनाइड, इट इज लॉन्ग एक्टिंग, देन फ्लूटिकासोन एंड सिक्लेसोनाइड. दीज आर द ड्रग, दे आर कॉमनली यूज्ड एज अ ICS. मतलब क्या है, इनहलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. They are indicated in case of persistent asthma. They are used in a concentration of 100 to 200 microgram in a particle size less than 25 microgram. Particle size should be less than 25 microgram. In a chronic obstructive pulmonary disease, they are only effective in an advanced stage. And long-term use of these drugs, more than 600 microgram per day, they may change your mood. Mood changes, osteoporosis may result, growth retardation in the children, and early cataract. These are the adverse effects: hyperglycemia, pituitary and adrenal gland suppression. Long term use of these drugs, these are the ADRs, adverse drug reaction. तो याद रखना है, इनहलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपका आता है बेक्लोमिथाजोन, देन बुडेसोनाइड, फ्लूटिकाजोन एंड सिक्लोसोनाइड. They are given by inhalational route. They are very effective, and they are very effective, and their particle size should be less than 25 micron. 25 micron से कम particle size होंगे. Long term use can cause changes in the mood, osteoporosis, मतलब आपके जो हड्डी है कमजोर हो जाएगी, growth retardation and cataract, hyperglycemia and adrenal and pituitary gland suppression. Now drug of choice in asthma. तो अगर आपको bronchial asthma है, उसका type, so acute attack of bronchial asthma, drug of choice is salbutamol. In case of acute attack, drug of choice is salbutamol. In case of acute attack in a pregnancy, again salbutamol. Acute attack during the labor, जब डिलीवरी हो रही है उसके टाइम पे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड. acute attack in a patient on a beta blocker. अगर कोई बीटा ब्लॉकर के ऊपर एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग चले और उसमें अटैक आता है तो इप्रोटोपियम ब्रोमाइड. फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड. प्रोफिलैक्सिस मतलब क्या, प्रिवेंशन. नाउ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, दो टाइप के होता है, एक होता है ब्रोंकियल अस्थमा, एक होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा. तो ड्यूरिंग द एक्यूट अटैक, अगेन साल्बुटामॉल इज ड्रग ऑफ चॉइस. फॉर प्रोफिलैक्सिस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा. तीसरा होता है एस्पिरिन इंड्यूस्ड. एस्पिरिन इंड्यूस्ड मतलब क्या, कि एस्पिरिन क्या करता है, इट इनहिबिट द साइक्लोऑक्सिनेज पाथवे, कॉक्स पाथवे, बट दैट्स व्हाई arachidonic acid is more diverted to LOX pathway, and there is a more leukotriene synthesis which can cause asthma. So acute attack में again salbutamol and prophylaxis के लिए corticosteroids. These are the drug of choice. ठीक है. Now we'll see the mechanism of this drug once more. तो last slide में मैंने mechanism include किया होगा. Right. So first one is nothing but the salbutamol. पहला है mechanism of action किसका, salbutamol. So salbutamol क्या है, selective beta 2 agonist. So selective beta 2 agonist, so which stimulate the adenyl cyclase, and that engages the cyclic GMP in the bronchial cell, which causes the phosphorylation of myosin kinase and relaxation of bronchial smooth muscle. So bronchodilation and relieving or improvement of bronchial asthma. ठीक है. सेकंड ड्रग होता है अमीनोफाइलिन. अमीनोफाइलिन क्या करता है, सो अगेन antagonize the adenosine activity on the surface of the bronchial.
So inhibit the modulation of adenine cyclic activity, inhibit the smooth muscle contraction, that means causes the relaxation, and also inhibit the release of histamine, so causes the bronchodilation and improvement of bronchial asthma symptoms. थर्ड ड्रग होता है आपका सोडियम क्रोमोगाइकेट एंड नोडोक्रोमिल सोडियम, मतलब मास सेल स्टेबलाइजर, so they will reduce the accumulation of intracellular calcium, induce the antigens inside the mast cell, so inhibit the degranulation of mast cell, no release of histamine and other inflammatory chemicals, prevent the bronchoconstriction and improve the symptoms of asthma. They are used for the prophylaxis. लास्ट में ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट कौन है? मोंटेलोकास्ट, ज़ैप्रोलोकास्ट. तो ब्लॉकेज ऑफ ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, inhibit the leukotriene receptor mediated action, reduces the bronchoconstriction, causes the vasodilation, macrovascular leakage, so bronchoconstriction and reduce the inflammation, edema, so improve the symptoms of your bronchial asthma. These are the drugs used in bronchial asthma. तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो चुका है, नर्वस सिस्टम हो चुका है, यूरिनरी सिस्टम हो चुका है, आपका सिर्फ ऑटोकॉइड्स वाला पार्ट बचा है एंड एंटीबैक्टीरियल वाला ड्रग बचा है फार्माकोलॉजी में. ठीक है. सो टुमारो मॉर्निंग 11 AM वी विल टेक अ प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर. तो कल मॉर्निंग में प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर अपन लेने वाले हैं, थोड़ा सा फास्ट ही लेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है आपका. फास्ट ले रहा हो क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है आपका. सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 11 AM. कल सुबह 11 बजे आपका फार्मास्यूटिक्स का प्री फॉर्मुलेशन का लेक्चर है. तो सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग 11 AM. और ज्वाइन करते जाओ लेक्चर, सभी लेक्चर नहीं ज्वाइन कर रहे लो.